یا علی مدد کامرے صاحب، یا علی مدد سر. یا علی مدد، یا علی مدد. بہت خوب، بہت خوب. یا رحیم الکریم. Indeed, the Rahim, the most merciful, is Kareem, the most generous. Ya Rahimul Kareem, Ya Imam Zaman, Ya Shah Rahimul Hazar Imam. Ya Mulai Mehربان، Ya Mulai Mehربان، Ya Mulai Mehربان، مدد فرما. یا مولائے مہربان، مدد فرما، مدد فرما. یا مولائے مہربان، مدد فرما، مدد فرما. یا رحیم الحاضر امام، مدد فرما، مدد فرما. یا مولائے مہربان، توفیق، تائید، ہمت و یاری مولا. توفیق، تائید، ہمت و یاری مولا. یا مولائے مہربان، مدد فرما، مدد فرما مولا. یا مولا، ہم غریبوں پر رحم فرما. اپنے نور سے ہمارے راستوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے عقول کو روشن فرما دے مولا. یا مولائے مہربان، ہماری دوروڑی فرما تاکہ ہم تجھے تیرے ہی علم اور تیری ہی نور کی روشنی میں جان سکے، پہچان سکے. یا مولائے مہربان، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں مولا. یا مولائے مہربان، مدد فرما، مدد فرما مولا. دیکھ مولا، ہم تیری ایک مسکراہٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں مولا. تیرے بچے تیرے ایک دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں مولا. یا مولائے مہربان، جلد سے جلد آ کر اپنا ظاہری اور اگر ظاہری ممکن نہ ہو تو باطنی دیدار نصیب فرما مولا، تاکہ ہم تجھے دیکھ کر ہمارے دلوں کو سکون پہنچا سکے مولا. یا مولائے مہربان، ہماری آنکھیں چاہے جاگ رہی ہو چاہے سو رہی ہو تیرے دیدار کی منتظر ہے مولا. یا مولائے مہربان، جلد سے جلد اپنا دیدار نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. تمام دوستوں کو یا علی مدد. And thank you for joining us early this morning and in the evening in other countries and afternoon in London. Welcome. May Mola, the Mola Zaman, the Rahimul Zaman be with you. May his blessing and Khanawadan be upon you. We will continue today
on the chain of light of Imamat, Nuran ala Nur. In most of our lifetime, this was the first time we have seen actually changing of a Jama. But the tradition of the Imamat and the principle of Nuran ala Nur, Imam after the other, light upon light, is from the beginning, from the time of Adam, and it will continue till the last day. The Nur of the Imam in the manifested body have always lived amongst the human and have never left the humanity even in the time of prophets. Imams were always present, sometimes more known and visible, and sometimes not so much known and not so much visible. But nevertheless, Imams are always and always and always present. When Khudawan Ta'ala in the Quran speaks of the Imams, there are 12 mentions of the word Imam and 49 times mention of the Imam as Nur, but in the three very particular places, Allah has spoken about the Imam as Al Hayyul Qayyum, the ever living and ever present. मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और बच्चों, नूरन अला नूर का जो असूल है, जो इस्लाम का असूल है, कुरान का असूल है और इस्माइली तरीके का फंडामेंटल असूल दीन जिसको कहते हैं, यानी कि एक इमाम के बाद दूसरा इमाम। हम में से अक्सर की जिंदगियों में हमने सिर्फ एक ही मर्तबा खुदा के इस माजिज़े को और इस वादे को और इस असूल दीन को पाया तकमील तक पहुंचते देखा कि किस तरह से इमाम के बाद इमाम होता है, नूर पर नूर होता है, नूर के बाद नूर होता है, इमाम के बाद इमाम होता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है।
जब से आदम दौर अव्वल से ही ये सिलसिलाए नूर चला है, जारी वो सारी है, और आखिरत तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। यहां तक के जब पैगंबरों का जमाना था, दौर शरीयत थी, दौर नबूवत था, तब भी इमाम हर हमेशा हाजिर और मौजूद होते थे। हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि कभी बहुत ज्यादा नजर आते थे और कभी कभार कुछ कुछ कम नजर आते थे, लेकिन हाजिर और मौजूद हर हमेशा रहते थे। कुरान के अंदर 12 मर्तबा इमाम का लफ्ज आया है और उन 50 मर्तबा नूर का वर्ड इमाम के लिए आया है। लेकिन इसके अलावा जिस चीज की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, ये वो 3 मकामात है जहां पर अल हय्युल कय्यूम यानी कि जिंदा और हाजिर व मौजूद होने का जिक्र है। अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो और अगर वो लिखना चाहे तो सूरह बकरा की आयत नंबर 255, आया कुर्सी के अंदर, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 3, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 2 और सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 111 में आपको अल हय्युल कय्यूम यानी कि हर हमेशा जिंदा और मौजूद अल हय्युल कय्यूम का जिक्र मिलेगा। और यही आज हमारा मौजू है। The 3 references are to Surah number 2, ayat number 255. I'm referring to Ayah Kursi. Surah 3, Surah Al Imran, ayat number 2. Surah Taha, Surah number 20, ayat number 111. And you will find the ever living and ever present Al Hayyul Qayyum. And that is the subject of our talk today. In other words, there has never been time that any human were without the Nuran ala Nur, the ever living and ever present Imam. With every prophet and in the time of every prophet, there were Imam and they were surrounded by the Imam. When I say surrounded by the Imam, it should give you a concept, a thought that there were Imams before them and there were Imams after them, and there were Imams always present.
It was the Imam of the time that had given the Isme Azam to Adam, to Hazrat Noah alayhi salam, Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Musa alayhi salam, Hazrat Isa alayhi salam, and all of the other 25 prophets mentioned in the Quran, and all of the other prophets which are not mentioned in the Quran. It was due to the living Imam that they had become the messenger, the prophets, because it is not possible to reach the higher level of spiritual elevation without the Imam, Imam's Noor, and Imam's Isme Azam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Therefore, when the last Nabi, Rasul Khuda, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam came, he was also surrounded by the Imams of the time. Imams of the time. As we understand that there has never been a time when there was not an Imam, but Imams are always and always present in this physical world to guide the humanity, and especially the Mu'mineen. And the Mu'mineen are guided by the Imam Zaman always. And so was Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Before he was given the prophethood at the age of 40, he was given an Isme Azam by the Imam of the time. And it was this Isme Azam on which he would go to the cave of Hira to pray, ibadat, concentration, Betul Khyal, Kare Buzrug, and it was the success of that Isme Azam which eventually honored him with the prophethood. It was the success of the Isme Azam that Hazrat Jibrail presented himself, bringing the messages and the wahi, the revelation of Allah to the Muhammad, the last prophet. At the end, you can ask if you like, if you are the true learner, if you wish to recognize the Imams, and if you like to know the names of the Imam, I will be more than happy to briefly share. And there are places, there are classes where you can go
and learn the recognition of the Imam as per Imam's wish, that I wish my Jamaat would recognize me, the Imam of the time, said our beloved Shah Karim Al Husseini during the Golden Jubilee. So, as the Quran was revealing, Prophet Muhammad was commanded by Khudawan Ta'ala. अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा उर्दू में समझाता चलूं, क्योंकि मुझे एहसास है कि बहुत सारे लोग इन सेशंस को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और उन ममालिक से ज्वाइन करते हैं जहाँ पर उर्दू बोली जाती है या इंग्लिश के अलावा ज़बानें बोली जाती है। तो नाचीज़ अर्ज कर रहा था कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी ज़माना इमाम के बिगर गुजरा हो, और हर ज़माने में इमाम की मौजूदगी इसलिए ज़रूरी होती थी कि वो लोगों को और ख़ास करके मोमिनों को दोरवनी दे। और ये इमाम ही थे जिनकी शफ़क़त, जिनका नूर और जिनका इस्मे आज़म हमारे पैगंबरों में काम करता था। यानी कि आदम को जिसने इस्मे आज़म दिया था, वो भी इमाम था। हज़रत नोआ, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक नातिकीन और जितने भी 25 पैगंबर कुरान के अंदर मेंशन हुए हैं, जिनका जिक्र है, और वो पैगंबर जिनका कुरान में जिक्र नहीं है, उन तमाम की कामयाबी का राज इमाम ज़मान और इमाम ज़मान का नूर और इमाम ज़मान का इस्मे आज़म था। और ये इस्मे आज़म ही था जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर इबादत क्या करते थे, बैतुल ख्याल में बैठा करते थे, कारे बुजुर्ग क्या करते थे। और इसमें आज़म ही से, और उसमें जब वो कामयाब हो गए तो जिब्राइल का ज़ूर भी इसमें आज़म की वजह से था। ये कोई रैंडम एक्ट नहीं था, बल्कि ये इसमें आज़म और नूरे इमाम का एक माजिज़ा था। और आप भी इमामों के दरमियान में घेरे हुए थे। आप में से जो सीखना चाहे कि जो इमाम शाह करीम अल हुसैनी ने फरमाया था कि काश मेरी जमात मुझे पहचानती, काश मेरी जमात जमाने के इमाम को पहचानती, तो ये आज भी मुमकिन है। ये फरमान बरदारी आज भी मुमकिन है। और आप इमाम के उस फरमान पर चलते हुए कि आप उन क्लासेस को ज्वाइन करें जहां पर मजहब का इल्म दिया जाता है, जहां पर इमाम शनासी सिखाई जाती है।
जहां पर इमाम की फरमान बरदारी सिखाई जाती है। अगर आप चाहें तो आज भी इस फरमान पर चल सकते हैं। और आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कौन से इमाम थे जिन्होंने आपको इसमें आजम दिया था, और आपने कहा कि वो इमामों के दरमियान में घेरे हुए थे, तो ये कौन से इमाम थे? तो ये सवाल भी हो सकता है। तो जब कुरान का नजूल होने लगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की तरफ से एक हुक्म आया। So when the revelation of the ayat and the Quran started, a command of Allah came, and especially in the time of need, and especially in the time of hardship, the Farman of Allah was revealed as a command, as a Farman, and that was وَتَوَكَّلُوا عَلَى الْحَيِّ, that, O Muhammad, you put your trust in the ever living Al Hayyul Qayyum, ever living, only and only trust the ever living. Tawakkul ala al hayy al la yamut, upon whom who never dies. तो जब कुरान का नजूल होने लगा और जब हालात बिगड़ने लगे, तो खुदावन ताला का फरमाने इलाही उतरा। किन पर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि देखो, सिर्फ और सिर्फ हर हमेशा उस पर भरोसा करना जो जिंदा, हाजिर और मौजूद इमाम है। अपना तवक्कल, और तवक्कल का वर्ड आपने हमारी दुआ में सुना है कि आप तवक्कल रखें इमाम ज़मान पर, जिंदा इमाम पर, जिंदा इमाम पर। यही हुक्म कुरान के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया कि सिर्फ और सिर्फ अपनी तवक्कल, अपना भरोसा, अपना ट्रस्ट, put your trust in the ever living, the one who never dies. दुनिया में एक ही ऐसा शख्स है, एक ही ऐसा इंसान है, और वो है इमाम ज़मान, जो हमेशा जिंदा, हाजिर और मौजूद रहता है, कभी भी नहीं मरता है, कभी भी नहीं मरता है। ये सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 है, आयत नंबर 58 है। आए हम उसको अच्छी तरह से 58 को भी और 59 को भी। So let's come and review this ayat 58 and also look at 59 along with it. Put your trust in the ever living, the one who never dies.
and glorify his praises. Sufficient is he, as all aware of the fault of his servant. हमेशा अपनी तवक्कल भरोसा उस पर रखो जो कभी मरता नहीं है। और दुनिया में एक ही ऐसा इंसान है, और हमेशा उसी की तारीफ में लगे रहो, उसी पर सलवात भेजते रहो, और वो काफी है, वो एक काफी है, और वो हर बात को जानता है जो आप करते हैं। वो हर बात को जानता है जो आप करते हैं। क्यों? He knows, he is aware of all things. How? You are always with me, and I am always with you. I know what you do, as I am always with you. I know what you do, as you are always with me. He is your witness, and he is sufficient for you. अगर आपको किसी पर भरोसा करना है, किसी से मांगना है, तो मैं नहीं कहता हूं, अगर हुजूर के लिए ये हुक्म था खुदावंद ताला की तरफ से कि अपना भरोसा अलहई पर रखना, यानी कि जिंदा इमाम पर रखना, तो आपको क्या करना होगा? What should your action be? आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए भाई? And who is sufficient? हस्बनुल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर. He is most sufficient. He is your master and he is your helper. So trust him. Put your trust in the ever living. Put your trust in the Imam Zaman, as he is sufficient and he is aware of all, because he is always with you and you are always with him, says Shah Rahim al Husseini, Hazir Imam, Allahumma Salli Allah Muhammadin wa ala Muhammad. He is the one who created the heavens and the earth. यही तो वो है कि जिसने आसमान और जमीन को बनाया, और जो कुछ भी उसके दरमियान में है, सबको वही बनाने वाला है. He is the one who created the heaven and the earth and everything in between in these 6 days. Then establish equality on the throne. और फिर 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाने के बाद उसने अपने अर्श आला पर मसावत रेमानी का काम का आगाज किया. अब आप पूछेंगे कि ये कौन है जो जिसने जमीन और आसमान को बनाया और जिसने अर्श पर मसावत रहमानी का काम किया? तो खुदावंद ताला जवाब देते हैं, नाउ यू कैन आस्क, हु इज इट हु डिड build the heaven and the earth and everything in between, and who did the masawat remani on the arsh? Allah answers, he is ar-Rahman. He is ar-Rahman. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. He is the Rahman. And how do we know? And who should we ask? How do we know and who should we ask?
Allah answers, ask about him, the Rahman, the Al-Hayyul Qayyum. Who was the Al-Hayy, the Lord of the Adam and the Lord of the Huzur, the Lord of the Awal and the Lord of the Akhir. Who is this Rahman that you speak of? Khuda answers your question. He says, ask about him, the Rahman, from those who are well informed in the knowledge. और ये रहमान कौन है कि जिसने जमीन और आसमान को बनाया और जिस पर भरोसा करने के लिए हुजूर को फरमान किया गया? ये कौन है रहमान जो अल हय्युल कय्यूम भी है, जमीन और आसमान को बनाने वाला भी है? मैं किससे पूछूं कि ये रहमान कौन है? तो फरमाया कि पूछो उनको जो इल्म में पुख्ता है। Hazrat Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alaihi, may our soul be sacrificed to that Imam, in one of his farman says, who can be teacher? The one who is complete, not Tom, Dick and Harry, who is complete in the ilm and also must have some understanding of the batin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. पूछो उनको जो इल्म में पुख्ता है। फरमाया हमारे 48वें इमाम कि कौन टीचर हो सकते हैं? जब इल्म और मजहब की बात आए तो कंप्रोमाइज नहीं होता है कि कोई भी आलू चालू इधर उधर आप चले गए पूछने के लिए कि भाई हमें थोड़ा सा इल्म सिखा दो। इल्म में पुख्ता होना चाहिए, फरमाया 48वें इमाम ने, और साथ साथ उसके पास रूहानी इल्म और तजर्बात भी होने चाहिए। वो आपको बता सकता है कि रहमान कौन है। ये किस अल हय्युल कय्यूम की बात हो रही है? ये कौन है रहमान जिसने जमीन और आसमान को बनाया? प्लीज look up this ayat. Let me bring you to a Farman Mubarak of Shah Kareem. Please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Farman Mubarak, Imam says, first, let me remind you that for all murids of the Imam, whether they are from Central Asia, from India, from Pakistan, from the Western world, the fundamental principle is the recognition of the Imam of the time. It is he who interprets the faith. It is he who guides the Jamaat in the interpretation of its faith. And at any time during its lifetime, Maulana Shah Karim Ul Hussaini, Moscow, Russia, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. मौला फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं
کہ امام کے مرید ہونے کے ناطے سے چاہے آپ سینٹرل ایشیا سے ہو، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، ویسٹرن ممالک میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اصول دین ہمارے مذہب کا پایہ یہ ہے کہ آپ زمانے کے امام کو پہچانیں، کیونکہ یہی تو وہ ہے جو مذہب کی تعویل اور سمجھ دیتا ہے، اور یہی تو ہے وہ جو آپ کو دروانی دیتا ہے، اور یہی ہے جو تعویلات میں زمانے کے حساب سے اپنی زندگی کے اندر آپ کو سمجھاتا ہے۔ اور گولڈن جوبلی میں مولا نے فرمایا perhaps my Jamaat would recognize me, perhaps my Jamaat would recognize the Imam of the time. اور یہ دوبارہ سے، یہ 1995 تھا، 2007 میں دوبارہ سے امام نے فرمایا کہ کاش میری جماعت مجھے پہچانتی، کاش میری جماعت زمانے کے امام کو پہچانتی، یعنی کہ کاش میری جماعت کے پاس امام کی شناسی ہوتی۔ Perhaps the Jamaat would recognize the Imam of the time. What does Shah Rahim says regarding this? If you have worries, if you have concerns, then turn to your Imam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. اور ہمارے حاضر امام کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ کے پاس کوئی پریشانی ہو، کوئی سوالات ہو، کوئی بھی بات ہو، تو آپ امام کی طرف دیکھیں، امام کی طرف اپنا توجہ رکھیں۔ یاد ہے آپ کو قرآن میں حضور کا کیا فرمایا گیا تھا؟ Put your trust in the ever living. امام کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ آئے میرے پاس آئے، آپ کو کوئی سوالات ہے، آئے آپ میرے پاس آئے، میں زمانے کا امام ہوں، میں آپ کو دروانی دوں گا۔ Just a couple of weeks ago, not even 2 weeks ago, about 10 days ago, Imam Zaman says, the Shia Imami Ismaili Tariqa is founded on the Islam's fundamental principle of Tawheed, the oneness of Allah. ابھی تھوڑے ہی دنوں پہلے مولا نے فرمایا ہم کو کہ ہمارے طریقے کا جو اصول دین ہے وہ خداوند تعالیٰ کی وننس پر رکھا گیا ہے، and also founded on Allah's final message to the humankind conveyed by the Prophet Muhammad, peace be upon him, and the progeny. اور ہمارا اصول حضرت محمد کے میسج پر رکھا گیا ہے، توحید اور اسلام کے، and on the continuum of the امامت، اور امامت کے جاری و ساری ہونے پر رکھا گیا ہے۔ It has been a responsibility of every imam since the time of Hazrat Ali Murtaza sallallahu alaihi wasallam to care for the spiritual and the material well-being of the Jamaat. اور یہ ہر امام کا کرتویہ رہا ہے حضرت علی مرتضیٰ کے زمانے سے کہ وہ جماعت کی دورونی کریں،
یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کی روحانی اور جسمانی زندگی کے لیے آپ کی مدد کریں. For the care for your spiritual and material well-being of the Jamaat, and for the safety and for your security. اور آپ کی حفاظت کا بھی ذمہ دار امام زمان ہے. I dedicate my life and the imamat resources to this role and this responsibility. اور میں اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کرتا ہوں. یہی بات شاہ کریم نے 1957 میں فرمائی تھی کہ جس طرح سے میرے دادا نے اپنی پوری زندگی آپ کے لیے وقف کی ہوئی تھی، میں بھی اپنی پوری زندگی آپ کے لیے وقف کرتا ہوں. اور شاہ رحیم الحسینی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بھی یہی آپ کو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی آپ کے لیے وقف کی. یہ ہے نورن اللہ نور. آپ توکل کریں امام زمان پر. And if you have any worries and concern, then turn to your imam. Your imam is with you wherever you are. Your imam is with you. جب آپ کے پاس کوئی پریشانی ہو، کوئی سوال ہو، اپنے امام کی طرف رخ کریں. وہ بھیجیں گا آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات. وہ آپ کو مدد کرے گا آپ کی پریشانی میں. وہ ذرائع پیدا کرے گا آپ کے لیے. آپ جائیں کہیں بھی ہے، امام ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. Your imam is with you and you are with the imam. آپ کا امام آپ کے ساتھ ہے اور آپ اپنے امام کے ساتھ ہے. The Jamaat is and will constantly be in my heart, in my thoughts and in my prayers. اور میری جماعت ہمیشہ میرے ساتھ ہے، میرے دل میں، میرے خیالات میں اور میری دعاؤں میں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. Let me stop here so we have sufficient time to discuss. And remember, we will cover the highlight points of the Faramin as this is a two-part session. The next part will be tomorrow morning in the USA at 9 a.m. Central Time, and others will follow that time. اور یاد رکھنا کہ یہ دو حصوں میں مکمل ہوگا. ہم کل صبح کو لندن کی دوپہر کو اور سینٹرل ایشیا اینڈ پاکستان وغیرہ کے لیے شام کو کل اس کو کنٹینیو کریں گے. اب اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یا علی مدد.